So, good evening, Gautam. How are you today? I'm good, ma'am. Good evening, ma'am. So, how was the morning? It was good. It was good. Okay. So, Gautam, tell us something about yourself. Thank you for giving me an opportunity to introduce myself, ma'am. Myself, Gautam Deepak Rathod. I am from Nivali, Madhya Pradesh, residing in Pune. Ma'am, I have completed my graduation from Savitribai Phule Pune University, Mm-hmm. and later on I have completed CMA in June 25 attempt. I have completed my articleship from a CA firm and a PSU, that is NSIC. And Mm-hmm. at CA firm, my work area included a filing of GST returns, TDS returns, income tax returns, and accounting. At a National Small Industries Corporation Limited, I was responsible to process payment under raw material assistance schemes to more than 50 plus MSME units. Mm-hmm. And I have prepared a bank reconciliation statement also and reconciled the outstanding balance of the clients as per the books of accounts. And apart from that, my hobbies includes playing cricket and traveling, ma'am. Thank you so much. Okay. So, you are from the uh, Newali, Madhya Pradesh. So, what is the purpose now? You are in Pune and you have done your college from the Pune. Ma'am, actually, Nivali is very small town. So when I was there in 10th class, so at that time there was no option for me to study there because there was no school who was providing 11th or 12th. So I had to Okay. move out from that town. So I chose Pune because my uncle was here only. So I came to Pune for further studies. Okay. Okay. So, tell us something about yourself. Tell us something about your NSIC experience. Like, what were your key learnings over there? Ma'am, first of all, the pressure handling, because every day I used to process payments under no, the raw material assistance scheme. A lot of payments were there. I had to process before 3 o'clock. So I learned about pressure handling and prioritizing the tasks and the team building and yes, ma'am, these things. Okay. Okay. Now, Gautam, mm, if you get a chance to conduct internal audit, what are the three specific documents you would like to follow first? Okay. First of all, ma'am, I would see the SOPs, the Mhm. organization's SOPs, and second thing, I'll check the financial statements and uh, yes, ma'am. This, Okay. What is your idea about the recent changes in GST law? ma'am, I think government has taken a very good step towards the growth of the country, I think, and they have reduced the rates, GST rates, GST rates on essential goods, essential goods, and I think it will increase demand and it will increase consumption, and hence it will increase the GDP of our country. So I think the government has made a very good step towards GDP. Okay, but what is your idea that government is losing a lot of revenues by just abolishing the two tax rates and reducing the tax rates on so many articles? Won't you think that it would be a huge loss of revenue from government side? Ma'am, initially, if we look, yes, there may be a revenue loss for government, but if the government is, seeing in long term, it is quite beneficial because it will increase the demand and it will increase the consumption. So ultimately, the tax will be collected more in future. So government is thinking about the long term benefits, long term revenue collections, I think, ma'am. Okay. What is the sequence of the utilization of input tax credit? Ma'am, first of all, IGST credit should be sorry, I
First of all, ma'am, IGST output liability should be set off against the IGST credit, and then CGST and SGST, and CGST output liability should be set off against the CGST credit first, and then IGST credit. And SGST output liability shall be first adjusted against the SGST credit and then IGST credit. But there should not be cross utilization between SGST and CGST credit. What is your idea about the concept of the pure agent services in GST law? Sorry, ma'am, I cannot recall it. Okay, okay, fine. What is the time limit for issuing show cause notice? I'm show cause notice. I'm sorry, ma'am, I cannot remember it. Whether GST is applicable on the TDS deducted under income tax laws? Yes, ma'am. It is deducted. It is applicable on TDS deducted, ma'am. Okay, okay. Yes, Diksha, hand over to you. Yes, good afternoon, Gautam. Good afternoon, ma'am. Okay. Gautam, my first question from you will be that what is the most ethical decision you have ever taken in your life? Ethical decision, ma'am. I'll say I'm very helping person, so I always try to help as I can do. Like so, whenever I get opportunity to help anyone, so I just do it, ma'am. One such decision I'm asking about, which you think till date is the most ethical one of your life. Uh, I had made a mistake. I was in sorry, uh, I was in articleship at NSIC. I had made a mistake, but I could hide it also. But uh, I मतलब सर को जाके बता दिया वो कि ये मेरे मुझसे ये मिस्टेक हुई है. सो आई थिंक आई मुझे पता था कि मुझे उससे डांट पड़ सकती है, बट मैंने वो सर को जाके बता दिया. आई थिंक इट वाज माय एथिकल डिसीजन. Okay. Coming to some technical questions, what is STT, Gautam? Ma'am, it is a security transaction tax. When we purchase or buy the purchase the securities, it is collected. What is the treatment of STT under PGBP and capital gain? Ma'am, STT paid is not allowed under PGBP and also capital gains also. So you are saying that STT is not considered under PGBP and capital gain, Yes, both. ma'am. Yes, ma'am. Okay. What is advance tax? Ma'am, advance tax is, ma'am, the tax which is collected in advance before the previous year. For example, a person is earning an income, he has to deposit the advance tax uh, quarter wise after before every quarter end. Okay. Why there is need of TDS and advance tax both? Ma'am, it is deducted in advance. Both are deducted in advance when, or in case of TDS, whenever the payment is done. Because, ma'am, होता क्या है normally at the end of the financial year, so in एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो सप्लायर्स है या फिर जो जो पर्सन है वो टीडीएस टैक्स डिपॉजिट नहीं कर पाते थे. तो उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म लाया जिससे पेमेंट के टाइम पे ही वो टैक्स कलेक्ट हो जाए और गवर्नमेंट को सबमिट हो जाए और बाद में उसका क्रेडिट मिल जाए. ओके. तो आपके हिसाब से थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए यस. और टैक्स इवेजन के चांसेस को कम करने के लिए ऐसा किया. यस मैम. ओके. Coming to some finance questions, what are derivatives? Ma'am, derivatives are the contract of underlying securities, for example, futures, options, interest rate swaps. Yes, ma'am. Yes. Some types of derivatives? Ma'am, futures, options, interest rate swaps, and forward contracts, ma'am. Okay. What is margin money?
Ma'am, margin money is required in case of future contract, I think, and it for ex before executing a contract, the uh, buyer or seller has to deposit a certain percentage of amount for before executing a contract. For example, 20% in case of future contract is required. So yes, ma'am. Are there any types in margin money? Ma'am, I cannot recall it right now. Okay. What is option premium? Ma'am, I cannot recall it, ma'am. Okay. Um, this is from accounting. What is the difference in the treatment of operating lease and finance lease as per India's 116? Ma'am, first of all, the lesser classifies the lease as per finance lease and the operating lease. In case of finance lease, the ownership and rights are transferred to the lessee. In that case, the lessee charges the depreciation on the asset. But in case of operating lease, the ownership is not transferred to the lessee. In that case, the depreciation and impairment testing should be done by the lessor only. Okay. All right. My last question from you, that why, according to you, as per your understanding of income tax law, why deductions have been removed from the new regime, which we also known by the section 115 BAC? Uh, yes, ma'am. Ma'am, many of As per your understanding, I don't want the proper logical reason, but what you think that why government have removed it? as per in 115 BSE, right? Yes. Yes, ma'am. Ma'am, abhi, sorry. Ma'am, in 115 BSE, most of the deductions are not allowed, and but the limit of income which is not taxable is improved. For example, it's not increased. For example, till 12 lakh, it is you don't have to pay any tax. So government is promoting 115 BSC by reducing deductions. Uh, yes, ma'am. That's Okay. Okay, Gautam. Yes, Ritika ma'am. So, yes, Gautam, as I can see in your CV that you have prepared bank reconciliation statement now. yes, ma'am. So, when BRS is prepared, Ma'am, when there is a difference between the balance as per the books and balance as per the bank, so we account every difference in that. What are the difference and whatever will be the difference, will account for it. is there any specific date or month wise or annually when it can be? Ma'am, there was in an Yes. bank reconciliation statement was prepared on monthly basis. So we can prepare it on monthly basis or weekly basis maybe. Okay. Um, I am reconciling cost accounting profit with the financial accounting profit, and what I can see is there is difference. So, what can be the reasons for such difference? Uh, yes, ma'am. Financial accounting and cost accounting. Ma'am, r- some costs are considered in cost accounting, but not in financial accounting. So maybe for that reasons, the uh, difference should be there. Or for example, interest cost is not sorry, interest cost is not allowed in cost accounting, but it is debited in financial accounts. So it may make a difference between both the accounting profits. So yeah. Okay, can you please tell that where donation have to be mentioned in the cost sheet? I think donation is not included in the cost sheet. Sure. Yes, ma'am. Okay. Tell me the difference between marginal and absorption costing.
Ma'am, marginal costing, we considered variable cost, and the decisions are taken on based on the variable cost only. We do not consider the fixed cost. But in absorption costing, fixed cost is also considered, and it is yes, ma'am. Fixed cost is also considered, and we identify the rate which should be applicable to the expenses, ma'am. Anything about zero-based budgeting? Um, I'm sorry, ma'am, I cannot recall it. Okay. Anything about diluted EPS? Yes, ma'am. The There are some convertible instruments like convertible debentures, convertible preference share. So the basic EPS doesn't account for it, but diluted EPS is calculated after considering the convertible instrument, which can be convertible in future into the shares. So it considers the that also. Okay. What is margin of safety? Margin of safety, ma'am, the sales over the basic uh, break-even point, ma'am. Difference between break-even point and shutdown point? Ma'am, shutdown point is break-even point is uh, where there is no profit and no profit or no loss. And shutdown point is calculated as when we should whether we should shut down the business or not. Though the, it is the basic difference in that. Okay. Sonal ma'am. Yes, Jagdish, um, tell me something about your major achievements till date. Ma'am, my major achievements till date, I would say qualifying CMA exams in first attempt, and yes, ma'am. Anything else? Mm, Okay, we have many other candidates also. Why we should hire you? Ma'am, you should hire me because I am adaptable to any changes or challenges. Because when I came to Pune, I had faced a lot of difficulties and challenges and changes. So I had adapted that. So I think whichever organization I'll join, I'll adapt this environment of that organization. And second thing is, ma'am, I'm a team player. I always try to collaborate with my team, and this is why you should hire me, ma'am. Any example where you can prove of this assumption of yours that you are a good team player? Yes, ma'am. When I was at NSIC, uh, ma'am, different tasks were given to us. We were a team of 4 to 5 people. So we always try to help each and every each other. Like जब भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती थी, मैं हमेशा उन्हें जाके हेल्प करता था. एंड वंस एक बार ऐसे हुआ था, मैम, कि मेरे कलीग से कुछ मिस्टेक हो गई थी. ही वाज सो स्केर्ड अबाउट दैट मिस्टेक. सो आई वेंट टू माय मैनेजर एंड आई कम्युनिकेट हिम एंड सॉर्टेड इट ऑफ. लाइक मैंने मतलब सारी उस जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट किया था. So, have you ever been come across with the cases where the people are struggling with their deadlines and you go to them and you help them in completing the task assigned to them? Yes, ma'am. At NSIC, I did that. Okay, then this is an issue that you are saying that you are a good team player, but don't you think that you are spoiling the team because our organization is paying everyone, and if the other person is not completing his task and you are going and you are handling the situation, what if you resign the company? How they will handle the situation? Ma'am, ma'am, I have just helped them only, like to just complete the work. Um,
Okay, not able. I want to know what is the corrective action you took. Okay, one time you helped, but what corrective action you took for the another chance? I cannot remember it. Okay, suppose you have some different opinion with your boss. Uh, how you will handle the things? I'll communicate to him, and whatever he'll will discuss about that, discuss about our opinion. I think he will respect my opinion also, and uh, he is also a professional, so I think he will understand and will arrive to some will arrive to some solutions, ma'am. I'll discuss to him. Okay. Um, if you get a chance, tell me one thing you would like to change in your personal life, as well as one thing you would like to change in your professional life. Ma'am, I think in personal life, personal professional life, I'll say I would, ma'am, I'm not able to answer this. You can take a minute and then you can answer. Personal and professional life. Sorry, ma'am. Okay, that's it. Thank you. Uh, सौरभ क्या गौतम Yes, ma'am. ठीक है आप अच्छा कर रहे हो गौतम एक दो चीजें जो टेक्निकली हमें ठीक करनी है वो तो अपने को जैसे अभी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है आपने जैसे अपनी बात भी हुई थी है ना जीएसटी इज अ पेन पॉइंट फॉर यू बट सीवी में तो जीएसटी का काम लिखा हुआ है तो थोड़ा सा जैसे आईटीसी वाला आपने आंसर ठीक दिया बट प्योर एजेंट सर्विसेज यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है ना प्योर एजेंट या वो याद नहीं आपको प्योर एजेंट की सर्विसेज वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होती है इट इज जस्ट अ रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस थोड़ा सा वो टेक्निकल के Yes, ऊपर ma'am. अपने को काम करना है एंड यू आर अ गुड टीम प्लेयर ठीक है दिस इज मैं चाहूंगी ये आंसर आप अवॉइड करो एज अ टीम प्लेयर ठीक है उसके अलावा Yes, ma'am. आप कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस टीम प्लेयर मतलब हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया ठीक है बट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर नॉट specified by our senior so what I did I tried to convince the colleague and I convinced them that let's do a meeting let's sit together and I we pen down the task the total number of tasks and I took a lead and we decided to bifurcate the task among us and उसके बाद हमने सबने मिलके काम किया and did a, we were able to complete a deadline so I think this way I'm a good team player ठीक है मतलब टीम को साथ में लेके चलना ओके और Yes, ma'am. दूसरा मैंने आपसे अभी जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था in a personal life as well as a professional life what one thing you would like to do a change so personal life में तो बहुत सारी चीजें होती है ना I always just postpone my fitness regime so I would like to start a morning walk because if I'm maintaining my health then only I can perform professionally and in a professional terms uh, I would like to develop a reading habit Yes, ma'am. so that I may be more aware what is the self help books I non fiction में पढ़ना चाहता हूँ या technical books में पढ़ना चाहता हूँ I'm not good at reading so I just want to improve in to enhance my professional knowledge ये करके आप बोल सकते हो यू ट्राइड मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश आई वुड मैं मेरा ओपिनियन है अच्छा था वो अगर हमें लग रहा है हम नहीं बोल पा रहे हैं तो बोल पाएंगे दूसरी चीज हमने एक इंटरव्यू क्वेश्चंस करके पीडीएफ डाला हुआ है ऐप पे मैंने बहुत बार आपको बोला Yes. है उसके क्वेश्चन बीपीसीएल पीएफसी उनके क्वेश्चंस ना एक एक बार आप गो थ्रू कर लो जैसे वहां पे ना कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे मैं भी आपको रीड करके बता रही हूँ हाउ द मार्जिनल कॉस्टिंग इज रियली हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग give us example of marginal costing where we use it what costs are considered in marginal costing and what are not what is your logic behind it ठीक है
इन मार्जिनल इज मार्जिनल कॉस्टिंग ऑलवेज बेटर, इफ नॉट व्हाई, इफ यस व्हाई, ऐसे करके कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, तो एटलीस्ट वो चीजें तो हम एक बार गो थ्रू कर लें। अभी शॉर्टलिस्टिंग किस में आई है गौतम आपकी? मैम एफकन्स में ही आई है, बट वहां पे मुझे जाना नहीं है। अच्छा, अभी और कोई शॉर्टलिस्टिंग मेल नहीं है? नो मैम, एक्चुअली मैम मुंबई कैंपस में कंपनीज ही नहीं है, और आईटीसी आई है तो आईटीसी में मैम वो शॉर्टलिस्टिंग नहीं आया अभी तक। नहीं आया है, ठीक है, ओके, ठीक है गौतम, ओके। मेरे पास आई, as I shared in the group, I will share the few of the CVs to some candidates जहाँ पे मुझे लीड मिली है, because campus is not it's not great this time, so वो आपका सीवी मैं शेयर कर दूंगी, बट डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स तो बाद में ही आएगा। आप कैंपस में तो वॉक इन भी होंगे, पर आप जाना जरूर, डोंट थिंक कि मैं जाऊं नहीं, आप जरूर यस जाना कैंपस में, ओके। यस दीक्षा। यस मैम। हाँ गौतम, थोड़ा सा जब आपको आंसर नहीं आ रहा होता तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो रहा है, बट एक यस चीज मैम। इसमें पॉजिटिव ये है दैट यू इंस्टेंटली स्विच योर लैंग्वेज। आप इंग्लिश बोलते बोलते अगर आपको लगता है दैट आप कहीं फंबल कर रहे हो, आप हिंदी पे आ जाते हो, एंड दैट्स गुड, है ना, सो दैट एटलीस्ट आपकी बात तो कन्वे हो पाती है। अभी मोस्ट एथिकल डिसीजन में आपको सोचने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है, यस मैम। बट ओके, वो भी ठीक थी। एसटीटी वाली जो बात थी वो आपने गलत बताई है। एसटीटी पीजीबीपी में अलाउड होता है, कैपिटल गेन ओके में मैम, एसटीटी कैपिटल अलाउड गेन्स में नहीं ना, होता है। हाँ, ये पीजीपी में बाद में वो एसटीटी, समझा था। यस। एडवांस टैक्स आपका करेक्ट था, एंड द रीजन कि क्यों टीडीएस और एडवांस टैक्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं वो रीजन भी करेक्ट था। इसके अलावा जो गलत आपने टेक्निकल में बताया, एक चीज मतलब डिडक्शंस क्यों रिमूव हुई उसका आप सही से जवाब नहीं दे पाए। यस मैम। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा डिडक्शंस जब थी या अभी जो है ओल्ड रिजीम में, तो कंप्लायंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है ना, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें पीपीएफ में इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, एफडी करवानी पड़ेगी, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना पड़ेगा कंप्लायंस को इजी करने के लिए। और बहुत यस सारे मैम। लोग बहुत टैक्स एवेजन करते हैं डिडक्शंस के नाम पर। फेक अपना डिडक्शंस एंड ऑल। मेडिकल प्रीमियम, हाँ, मेडिकल प्रीमियम शो कर देते हैं या डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट शो कर देते हैं, तो वो सारी चीजें एलिमिनेट करने के लिए और इसीलिए स्लैब इंक्रीज कर दिया। यस मैम। ओके। यस मैम, थैंक हाँ यू। मैम। गौतम, कॉस्ट वाले आंसर्स तो काफी एक्यूरेट थे। एक आधा जो आपने बोला कि फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट कंसीडर्ड, आगे रेलेवेंट शब्द का इस्तेमाल करना था। फिक्स्ड कॉस्ट हालांकि लेस करते हैं प्रॉफिट निकालते वक्त, पर उसको डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट ट्रीट नहीं करते मार्जिनल के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को। हाँ, ओके मैम। बाकी सब सही था। ठीक है गौतम, आप कुछ पूछना चाहते हो? हम्म। आप, कोई क्वेरी आपकी? नो मैम, एक्चुअली बस थोड़ा कैंपस को लेके मतलब डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपसे मैंने बात किया था कॉल पे हाँ उसके हाँ, रिगार्डिंग। इट, आई नो इट इज देयर, मैं कनेक्ट भी कर सकती हूँ, एंड आई डू अंडरस्टैंड। सो देखो, ये एक बात तय है कि मेरी आज कुछ अब सीनियर्स से सही। बात हुई थी जो कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, मेरे जो बॉसेस थे या कलीग्स भी हैं, मतलब कुछ सेक्टर में रिसेशन है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि जॉब्स नहीं है। और कई जगह मेरे को ये भी ऑब्जर्वेशन मिला है कि इन लास्ट कैंपसेस में सीएमएस जो कंपनीज लेके गई हैं, दे आर नॉट डूइंग वेरी ग्रेट इन द इंडस्ट्री। बहुत बार ऐसा होता है ना, एक्सपीरियंस कि यस। इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कैसा है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बट आप ये मान के चलें कि इफ नॉट ऑन कैंपस तो ऑफ कैंपस भी हो सकता है। जैसे आज ही मैं आपको एग्जांपल, जो मैंने अभी आज बीपीसीएल, सॉरी, हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल दिया था, लास्ट कैंपस में एक कैंडिडेट थे, उनका ऑन कैंपस नहीं हुआ था, बट ऑफ कैंपस उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में जॉब लिया। अभी उन्होंने वो एक पीएसयू में जा रहे हैं, एनएमडीसी में, जहां पे उनका अभी वो जो है ना, तो ऑन देखिए कैंपस नहीं हुआ, इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग कि भाई पिछली बार बहुत यस। अच्छा कैंपस हुआ था, उनका नहीं हुआ। अभी वो फिर ऑफ कैंपस हिंदुस्तान यूनिलीवर में गए, एंड पता है हाउ मच पैकेज ही स्टार्टेड विद 11.5 लाख।
इट वॉज अ Okay. गुड पैकेज अगर ऑफ कैंपस जाते हैं। अभी उनका पीएसयू हो गया, अभी वो पीएसयू में जा रहे हैं, अब जो पोजीशन वो खाली कर रहे हैं उसी के लिए ही कनेक्टेड विद मी। तो मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था कि अगर बैंगलोर लोकेशन के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बताएं। तो अगर नहीं है ऑन, मान के चलो अगर कंपनीज नहीं है तो इट मे बी पॉसिबल, बट जॉब तो होगी और अच्छी ही जॉब होगी। सो Okay, मैम। ठीक है। देखिए कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कंपनीज हम और नहीं ला सकते, बट मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर कैंपस इतना खराब जाता है तो इंस्टीट्यूट ना मिनी कैंपस ऑर्गेनाइज करवाता है बाद में। I'm waiting और for that ऐसा only. मुझे किसी ने बोला भी था, शायद आपने या मुझे नहीं पता, किसी ने बोला था कि इंस्टीट्यूट में बात हुई थी कि कंपनीज आर नॉट कमिंग, बहुत नंबर ऑफ कंपनीज अभी नहीं आ रही है, तो वी विल ट्राई टू ऑर्गेनाइज अ मिनी कैंपस जहां पे हम कंपनीज को इनवाइट करेंगे। तो हो सकता है कि मिनी कैंपस ऑर्गेनाइज हो, मुझे तो लगता है 100% होगा तब तक ना। पर मैं आपको ये कहूंगी कि कैंपस में ना आप एक अच्छे मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना। जो कंपनी ने आपको भी शॉर्टलिस्ट किया, दे आर ऑफरिंग 6 लाख समथिंग, राइट? 6 lakhs. 6 Yes, लाख। ma'am. बट स्टिल मुंबई कैंपस में बहुत सारी कंपनीज वॉक इन देती है, ठीक है? Yes. जहां भी आपको मौका मिले आप अपना 100% पोटेंशियल के साथ इंटरव्यू दें।